जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरु जी महाराज की ब्लेस संगत और संगत बैम्बी सिंह आंटी जी उपस्थित हैं। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं माया आंटी वैंकूवर से। अभी हम दोनों बैम्बी आंटी से कुछ बात करेंगे। जय गुरु जी बैम्बी आंटी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। माया आंटी, जय और गुरु जी। जय Thank गुरु you for जी, joining us. जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी वासन अंकल, जय गुरु जी संगत जय जी। गुरु जी माया आंटी, जय गुरु जी बैम्बी आंटी। अब गुरु जी महाराज की बहुत ब्लेस संगत है। महाराज कहा करते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला। लेकिन जो आज की नई पीढ़ी है, जो नई संगत है, उनको गुरुजी के समय की जो सत्संग की मर्यादा है, उस हिसाब से वो कैसे आगे बढ़ेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? अंकल जी, हम सारे ही ब्लेस्ड हैं, कोई ऐसा नहीं है जो ब्लेस्ड नहीं है। और आई थिंक सारों को गुरुजी ने जो एक्सेप्ट किया है, तो हम ऑटोमेटिकली ब्लेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि और कोई गुरु इस दुनिया में है नहीं जिन्होंने अपने ऊपर अपने भगत का इतना कष्ट उठाया हो कि हम बहुत थोड़े कष्ट में बहुत कुछ सीख लेते हैं। सुनाने वाला और सुनने वाला, जब इनिशियली सबसे पहला सत्संग मैंने एस ब्लॉक में सुना था, चीमा अंकल थे, एंड आई कैन टुडे अंडरस्टैंड हिज एक्साइटमेंट कि अंकल was diagnosed with a massive heart problem, and Yeah. गुरुजी ने ब्लेस किया, and he came back, went to the doctor, and कोई भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी। The results came, doctors were shocked। जी आंटी। जब वो खड़े होके गुरुजी ने बोला जाके सत्संग सुनाओ, आई सो रिमेम्बर कि जैसे आप इस ब्लॉक में अंदर जाते हो तो लेफ्ट वॉल पे अंकल खड़े हुए थे, एंड मतलब इतने पैशनेटली अपना सत्संग सुना रहे थे, इतने पैशन और इतने disbelief that he had got cured, that it is possible that Guruji has actually done something. That time तो I said ये कुछ ज्यादा ही ड्रामा वाला सत्संग हो रहा है, इसके तो इनको मैं बोली लगाती थी कि 300-500 रुपए, दैट टाइम 300-500 रुपए was enough, कि ऐसे इनको मिलने चाहिए। ये नहीं पता था कि अब उसके बाद मैं भी यही काम करूंगी। मैं भी जी। उतने ही चाव से, उतने ही पैशन से, उतने ही अमेजमेंट से कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है और संगत के साथ क्या क्या हो रहा है, और कि गुरुजी की क्या क्या बातें जो उन्होंने इतने साल पहले बोली हैं वो सच आ रही। सो दिस इज गुरुजीज वे ऑफ लाइफ, सत्संग सुनाना एंड सत्संग करना। कहने सी थावे थावे मेरा सत्संग होगा, मतलब हर एक घर में मेरा सत्संग होगा। टू द एक्सटेंट कि उन्होंने बोला हुआ है एक टाइम पे इंडिया में गवर्नमेंट आएगी जिसमें सारे ऊपर से नीचे तक संगत होंगे, ये बोला कि इट इज बिकॉज हम इंसान है ना, हम जो मर्जी कर ले, जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारा ध्यान जी वो फोकस्ड भी रहता है और अनफोकस्ड भी रहता है, गुरुजी में भी रहता है और फिर अपनी प्रॉब्लम्स में भी, या ध्यान बट भी जाता है इधर उधर। तो सत्संग में हर एक को हर एक चीज सुनाई नहीं देती। वी मिस अ लॉट, वी मिस द एसेंस समटाइम्स, क्योंकि आजकल तो सिस्टम हो गया कि लंगर एंड सत्संग टुगेदर, जो तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ब्लेसिंग्स हैं, या आप लंगर खाओ या आप सत्संग करो। आप
आप किसकी बेइज्जती कर रहे हो, लंगर की या सत्संग की? दोनों में से एक की बेइज्जती हो रही है ना। तो जो हमारे कान में पड़ता है वो या हमारे या किसी और के लिए होता है. So we become conduits of people, carrying messages for people, not realizing we are the messenger, we are carrying things. गुरुजी जानी जान है, उनको पता था कि इस शरीर में मैं इतने टाइम तक रहना चाहता हूँ. ठीक है, उसके बाद गुरुजी ने अपना सिस्टम सेटअप कर दिया. एंड ही सेड आई एम अ प्रैक्टिकल गुरु. सो व्हेन वी यूज्ड टू गो देयर, सिंपल था. एम्पायर स्टेट गए, मत्था टेका. अगर गुरुजी गद्दी पे बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, हम इर्रिस्पेक्टिव जाके गद्दी को मत्था टेकेंगे और चुपचाप बैठेंगे. जैसे आजकल लोग गुरुजी की फोटो उठा के लेके जाते हैं कि गुरुजी आए, नथिंग लाइक दैट. गुरुजी वाज नॉट इनटू दिस काइंड ऑफ शो शाद. सिंपल है, गुरुजी की गद्दी पे गुरुजी की फोटो लगी हुई है. आप चाहिए जैसे आप गुरुजी को प्रणाम करते हो दिल से, वैसे ही आप उनको प्रणाम करो, मत्था टेको, चुपचाप बैठो. जो चाय प्रसाद हमें मिलती थी, हमें डांट पड़ती थी अगर हम पास ऑन करते थे, हमें डांट पड़ती थी अगर हम किसी और के लिए उठा लेते थे, अपने ही बच्चे के लिए नहीं उठा सकते थे. बहुत छोटा बच्चा होता तो हाँ गुरुजी को डुलाओ कि ਤੁਹਾਡੀ ब्लेसिंग्स ने आप उठाओ, अपनी ब्लेसिंग्स आगे क्यों दे रहे हो. सो चाय प्रसाद ऑल्सो. एंड देन somebody in the संगत said, बट अब तो संगत इतनी बढ़ गई है, फिर हम पास नहीं करेंगे तो चाय प्रसाद सबको मिलेगी नहीं. तो मैंने बोला कि सबको क्यों मिलनी है, आपके गुरु महान है ना, जिनको वो देना चाहते हैं उन तक चाय पहुंच जाएगी. या सेवादार तरीका बना लेंगे बीच में खड़े होने का, ट्रे पास करने का. जहां पर गुरु जी चाहते हैं वहां चाय प्रसाद मिलेगी, और अपना चाय प्रसाद का ग्लास खुद उठाइए. ये हमने सब नहीं किया. फिर वही ग्लास हम वो अपने सामने रख देते थे. सेवादार जब आए उन्होंने उठाया, वो ले गए. ये तो होता था हाल. फिर गुरुजी ने अपना मतलब शब्द वाणी कीर्तन जो भी गुरुजी लगाते थे वो तो लगा होता था. ठीक है, और ध्यान होता था और ध्यान नहीं भी होता था, पर साइलेंस होता था और कोई फोन गप्पे कोई आवाज एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं. बिल्कुल ठीक. लंगर प्रसाद आया, 4 to a थाली. जो सामने बैठे हैं, ये नहीं कि ओ तू आजा ओ तू आजा. हम भी कर चुके हैं वो. मेरे को भी चाहे, आई ऑल्सो वांटेड इनिशियली कि मेरी फैमिली मेरे साथ बैठे, मैं दूसरों का झूठा क्यों खाऊं. पर गुरु जी नहीं बैठने देते थे. वो कहते थे ये काट होता है, आप किसका कर्ज कैसे अदा कर रहे हो, एक रोटी एक चम्मच कुछ भी पास करके, आपको नहीं पता. वो काम गुरु जी का है ना. वो कहते थे गुरुआ का काम होता है सब कुछ खत्म करना, थोड़ा काम होता है पाठ करना बस, और सही रास्ते चलना. उसके बाद लंगर खाया. लंगर के बाद जल प्रसाद बाहर होता था, अंदर नहीं होता था कभी. मतलब यू ऑलवेज हैड अ गैप बिटवीन योर लंगर एंड योर जल प्रसाद. एंड जल प्रसाद एक कूलर तो लाइन इतनी लंबी होती, एक टावल जिससे हम पहुंचते थे जो भीगा होता था, वो इतना पानी पी चुका होता था कि फिर भी गुरु जी का दरबार है, वही टावल से हाथ पहुंचे जाते थे. ठीक है, और फिर अपने घर सीधा जाओ, आना जाना मेरे हाथ. गुरु जी के अंदर से वंस I have decided you will come to me, then whatever happens on the way is because I know that it is under my control. कहीं के एक्सीडेंट भी हुए हैं हमको, इतने बुरे एक्सीडेंट हुए हैं कि वो गाड़ी से बाहर निकल के देखे, अपनी गाड़ी को देख रहे थे हम बच कैसे गए. फिर गुरुजी ने वहां एम्पायर स्टेट में बैठे बैठे के ना वो फलाना फलाना उस दे कोल चले जाओ, उस आंटी दे कोल, उसका गड्डी खराब हो गई है. तो संगत जब वहां पहुंची थी तो गड्डी खराब है, खड्डी तो टोटल हो चुकी थी. So आना जाना मेरे हाथ. And then once you finish satsang, you go straight back to your home because then you are carrying blessings again for your house. So ये simple तरीका है, बहुत simplicity. You know, Guruji's facade, if you see, is very complicated. Cholas, mandir, the kind of sangat around him.
But when you get to know the essence of Guruji is very simple. It's actually the Jaliwala banan and the kacha that he loved when he rested. He is that simple. And वो भी ज़मीन पे, ऐनी के बेड पे सोए हुए, ज़मीन पे लेटे हुए, ते ओ चाय नाल अपना ते पकोड़े जो उन्होंने पसंद सी. That's simple. Correct. So the prasad, the mandir, everybody gets attracted by it. It is there to attract because हम दुनियावी लोग हैं. We get attracted, we get pulled by it, and then when we realize what the essence is, that's when we start. I'm sorry, the answers become too long. जी आंटी, over to you, my auntie. जय गुरु जी. जय गुरु जी. वासन अंकल, थैंक यू. आंटी, ऐसे बस मन करता है सुनते ही रहे आपको. बहुत सी संगत पुरानी जो गुरु जी के चरणों में बैठी, उनसे बहुत कुछ सुनने को, एंड वी ट्राइंग टू कनेक्ट विद गुरु जी. सोचते हैं हम भी कि हम जब कोई संगत सुनाती है ऐसे ही लगता है कि हम भी बैठे हुए उनके चरणों में और हमारे साथ हो रहा है. सो इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल. जैसे वासन अंकल ने कहा कि पूछा कि भाई सुनान वाले दा भी कल्याण ते सुनन वाले दा भी कल्याण. उन्होंने थोड़ा जिहा मैं डिफरेंटली ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਤਸੰਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਉਹੀ, you know, I'm getting into the very depth of it now, okay? Almost ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, but I feel that sometimes satsang same ਸੁਣ ਰਹੇ ਅਸੀਂ. So there was obviously a reason. Is there a hidden message? क्यों गुरु जी बार बार वही सत्संग सुना कहते सी तू फिर सुनाना है, and why the संगत had to listen to it over and over again? What was the importance of that? And क्यों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ क्या ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? What is the reason behind it, auntie? एक as I'm not very good with names, कि हम लोग नाम तो सारों के जानते नहीं थे तब. तो एक अंकल आते थे और वो ये सत्संग करते थे काले कुत्ते के बारे और कैसे कंटोनमेंट एरिया में रहते हैं और उनको काला कुत्ता, गुरुजी ने बोला था काला कुत्ते को खिलानी है रोटी, एंड काला कुत्ता कंटोनमेंट में कुत्ता तो आ ही नहीं सकता, कहां से ढूंढे. वो उन्होंने बोलना काला कुत्ता, एंड आई वुड गो गॉड, नाउ आई हैव टू लिसन टू दिस वन अगेन. ठीक है. फिर आई वाज ऑब्वियसली नॉट लिसन करके क्या करना है, and I was very busy just thinking my thoughts. But that Kala Kutta satsang must have taken place at least 20 times. And every time the guy would stand up, the Sangat would stand up and I would go, oh no, I don't want to listen to this again. फिर एक दिन डांट पई कि जिन्नी दफा सुनांदा हूं सुनिया कर, because in every line you get a different message. Every time you get a different message. It's not the same message. We are not open. We've thought, okay, Kala Kutta and Roti Khilani. But what is beyond that? What is the significance of the Kala Kutta? Who came as the Kala Kutta? What does the roti signify? Who are you giving the Kala Kutta roti to? And what does the Kala Kutta take the roti as? You know? So there are many things that we do not understand at that point, but if someone hits you afterwards, maybe years later, it'll hit you that, okay, this was the significance. Or somebody might just come to you and say, okay, this one, I have to do this thing, and you just say, okay, this is what I've heard, which is normal. But when you are talking about it, it will suddenly hit you, okay, this could be meaning, the meaning of this could be this. I mean, literally when I'm doing that, a lot of satsangs I hear and I go, okay. And when I'm telling Sati, my husband, the satsang, and then it hits me in a different way. The essence comes out different. Guruji is very, only Guruji can understand. Not that I can tell you for certain. I can only tell you the little bit changes that come in me every time I hear a satsang. So that is what I understand. Yes, certain satsangs have to be done a number of times for it to produce a particular effect on the speaker, on the recipient, both. Beautifully said, auntie. And I think
जो भी संगत जिहड़ी भी संगत इस वेले इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ आई थिंक अपने माथे ते वट ना पाण ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਟ ਨੋ देयर इज अ मैसेज एंड आई थिंक ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹਲੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਐਂਡ आई वाज फीलिंग ਕਿ ਇਹ ਆਂਟੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ so now it does make a lot of sense ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਂਟੀ ਫॉर शेडिंग लाइट ऑन दैट ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ if I ever had to ask ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ and I never knew it's going to be you so ਆਂਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਨਈ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ lost ਹੈਗੇ ਹਲੇ ਵੀ they're coming to the satsangs they're trying their best to connect but they're not able to either find the tools they seem lost and ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੰਡਿਤਾਂ ਕੋਲ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਸਰੈਂਡਰ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਅ वेरी small word surrender to Guruji है ना हम संगत को encourage करते हैं just surrender they don't really understand what surrender means I mean does surrender means सारा दिन बैठे रहिए गुरुजी दे मोरे पाठ करिए or does that mean what exactly should we be telling the new sangat so that they can really connect with Guruji on that level this is actually a personal thought I cannot say that Guruji said anything to me about this. Any new sangat that comes should read the Light of Divinity because that is one book which Guruji would pick certain sangat to write and then pick certain sangat to correct it. So it was already edited. So that book needs to be read by new sangat to understand the possibilities of Guruji. I'm sorry to put it that way, but इतने फेक गुरु आ चुके हैं दुनिया में कि लोग घबराते हैं. They tell us you're in a cult, you're being mind washed, तुम लोग पागल हो. But you have to experience the divine to get attached to the divine. So it's a two-way stream. Whenever a new sangat comes, should read Light of Divinity to understand that जिस दरबार पे आए हो ना हर चीज पॉसिबल है. ठीक है. दूसरा आजकल के सारे सत्संग भंबड़भूसे हैं. भंबड़भूसा is a word I've learned from Guruji. I had to actually go to my mother and know once Guruji said सारे में भंबड़भूसे नहीं लगता. Okay. And my mother-in-law is a Sadhani, was a Sadhani. So I kept repeating the word and going. I said, Mama, Guruji said this word भंबड़भूसा. Hey, is the matlab kya hai? Mom burst out laughing. And she's like, ha 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 ha. I said, but what is so funny about the word? Like Guruji ने क्या है कि Guruji ने किस तरह किया है? उन्होंने क्या है मैं अपनी संगत नो भंबड़भूसे विच रखना. Oh, she cracked up. ऐसा समझाओ तो सही भंबड़भूसा क्या होता है? कहते भंबड़भूसा means to keep in confusion. Confusion. ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ confusion ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ. Let them not know what I am going to do for them. No, does not let them know what he actually is. Guruji used to say, you all don't know what I actually am. Okay, all the devas are within me and I am within them. I am that big. Like when I used to decorate the Bada Mandir initially because I am a Sadhani. I would decorate Shivji Maharaj and Guru Nanak Dev Ji ka background heavy. And Guruji ka thoda sa flowers laga diya side pe. So at one of the functions, Guruji called me and said, they and me are equal. You will decorate both equally. And I just looked at him and I know in my heart I was like, you are not Guru Nanak Dev Ji. Correct. दिमाग से गल आती है. But over time, as you learn through experiences about Guruji and you start understanding him, I started decorating Guruji's side heavier and Shivji and Guru Nanak Dev Ji's side lighter.
because I had found my How light. beautiful. How beautiful. Yeah. So Sangat has to not get into the Bambadusa of satsangs, because satsangs are now most egocentric, because उनमें जो एसेंस है वो तो खत्म होता जा रहा है. अब तो डेकोरेशन एंड सिंगर एंड अब तो अलग चीजें हैं. और ये हमारा अमृत वेला वाला सत्संग विच इज टोटली रॉन्ग. मतलब ये चीजें आर डिविएटिंग फ्रॉम व्हाट गुरुजी हैज टॉट अस. And if you are continuing on it, that means it's your ego. And not only that, if you're continuing on it, you're also spoiling things for your kids, for your grandchildren, because you have, because of your ego, started something which new sangat are following blindly. Yeah. And so you have spoiled the chances of correcting, because tomorrow your own child will get up and say, was that right or was that right? Or I'm standing alone. That is how it is supposed to be. Is it supposed to be what the world is doing? It's very difficult to stand alone. It's very difficult to stand for the right alone. It's very easy to go with the flow of the crowd. So to find a true satsang, to pray to Guruji, to send them to a satsang where there's actual love for Sahib. So maybe छोटे satsang, maybe sangat should go at smaller gatherings, or because as Guruji used to always be in such beautiful cholas. तो क्या आज भी वही हो रहा है आंटी? आज भी मुझे फील होता है कि डेकोरेशन पे इतना फोकस देते हैं यहाँ पे संगत. मेस्मराइज हो जाती है संगत कि हमने जाना है, तैयार होके जाना है, गुरुजी के लिए जाना है, which is a beautiful thought, but does that take away the simplicity of the satsang जो गुरुजी के सत्संग पे होता था when he was there? I mean, I'm trying to understand myself too. What is wrong in that, or what is it that we need to stay away from and to stay completely connected? When we went on a regular day to Guruji, okay, there was no flower decoration. There was just Guruji's gaddi and Guruji, of course. But Guruji कहते सी तैयार होके आओ. ऐनी के घर दे सारे डायमंड्स लटका के आ जाओ, पर तैयार होके सोने बन के नए कपड़े पा के आया करो. Because the reason behind, एक तो गुरुजी कहते सी मेरी संगत मेरी तोड़ होंदी है. टोर ना लाई ना. हाँ जी. टोर ना लाई, टोर ना लाया करो. Yeah. So दूजी गल कहते सी कि when you wear these very positive, because when you get ready, you will wear very positive colors and very you will have a positive attitude, and your face will be glowing because you know you're looking good or you're looking smart, and you want to show Guruji you're looking nice, you know, for him. So your energy also changes. So yes, have a bath. Even when I do a Zoom satsang, I will first have a bath, then get ready for him, because ultimately हम गुरुजी की बातें कर रहे हैं और गुरुजी कहाँ नहीं होते. ठीक है, have a bath, get ready. Guruji himself used to say कि मैं जब सत्संग तुसी आन तो पहले नहा धो के तैयार होके आंदा, फिर मैं गद्दी पे बैठता. So that is his way. Okay, fine. This is the simplicity of it. When we used to have a function, Guruji used to like a lot of lights, a lot of flowers, but not crazy amount. Guruji would say more. मेरे को हमेशा डांट पड़ती थी क्योंकि मंदिर में लाइट्स कम लगती थी उनको. यानी होल लाइट लगा, होल लाइट लगा, होल लाइट लगा. It used to be like that. Never कि होल फ्लावर्स लगा. It was always और लाइट्स लगा. So that was very much there. We all are spending crazy amounts on satsangs. Okay? वही चीज आप गरीबों को दो. वही चीज जो आपने डेकोरेशन के लिए रखी है उनको दो. If you're super rich or something, fine, it's pocket change for you. But if you are somebody who has to budget it, then it is the good idea कि जो गुरुजी कहते थे बच्चों की सेवा करो, लड़कियों की शादी करवाओ, बच्चों की एजुकेशन करवाओ. Those things invest, because those are things that Guruji desired. Guruji taught us, not things that we are desiring. Satsangs are truly desire based a lot. Yes, they are blessings. Guruji is coming to your house, everything is happening. But what's happening nowadays is become very desire based, and
वेरी के कौन मेरे सत्संग में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कितने आ रहे हैं वगैरह। इट्स ऑल्सो इट्स दुख भी होता है आंटी कि लोग कहते हैं कि अरे आपका बुलावा होगा तो आप आ जाओगे, बट इट्स कहाँ पे गुरु जी को कहाँ मौका मिलता है, क्योंकि संगत ही डिसाइड करती है हमारी प्ले कौन लोग आएंगे नहीं आएंगे, किनको एक्सक्लूड करना है इनको इंक्लूड करना है। सो देर इज द डायनामिक्स हैव चेंज्ड। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ मैं देखी है कि बड़ी संगत हैगी ਜਿਹੜੀ कंपेल्ड फील करती है दैट सानू भी दरबार बहुत सोहना सजाना पैना है बिकॉज गुरु जी महाराज आ रहे हैं। वाई कैन बी अ सिंपल चेयर? यस, आई मीन देयर इज नो एंड टू इट, जिन्ना मर्जी ब्यूटिफाई कर लो गुरु जी महाराज ले, या गुरु जी महाराज बुरा नहीं मननगे आई एम श्योर, बट वाई इज द संगत फीलिंग कंपेल्ड कि हमको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है दरबार बनाने का? संगत मतलब decorum should be there, discipline should be there, what Guruji loved the most. But have we lost the discipline somewhere, Auntie, in our satsangs? Yes, we have. Too much about the darbar. Ude baare dasso kuch. No, I think in Gurgaon, Auntie had a satsang. Bhati Auntie had a satsang. Usha Bhatti Aunty. Usha Bhati. And somebody I know was there, and she mentioned that Bhati Aunty said that this is the first time I haven't been able to sit because I have had to go and tell people to keep quiet, Sangat to keep quiet, and not use phone or something like that. So yes, even when we used to do satsang, the only flowers that we had were around Guruji's photo, and because we have all the 10 gurus in our darbar, ek phool, just one flower on top of all of them, and that was it, the decoration, so that there was at no point no sangat looking around and getting mesmerized by anything, but the focus was on Guruji. Auntie, it is such a personal thing that, like you said, when new sangat come, they look at what has been happening, and so they want to follow. They also want to do those things for Guruji which they think they see which Guruji likes. And that is where this Bambarbusa is really taken off. ये चीज ना बहुत गलत हो रही है कि जितने सिंपलिसिटी से चीज होनी चाहिए, जैसे एम्पायर स्टेट में कहाँ हम लोग ऐसे करते थे, कहाँ इतना धूमधाम होता था, मतलब 5 फंक्शन साल के होते थे, उनमें यस गुरुजी लाइक डेकोरेशन, तो जो सत्संग नो, इवन व्हेन गुरुजी यूज्ड टू गो टू अदर पीपल्स हाउसेस, यू नो, संगत के घर लड़ियां मोस्टली टंगी होती थी गेंदे की, नॉट के पूरा ऐसे नहीं आते. I really wish the Sangat wouldn't do that, would understand that is not a criteria to make Guruji happy. No, that's not. Our Guruji is beyond those things. I mean, it definitely gives Sangat happiness. मतलब बहुत चाव से मैंने देखा है संगत करती हैं, ऐसी बात नहीं है, चोले भी सिलते हैं. They want to do the best for our Guruji, and especially because Guruji always used to be in such beautiful cholas. But वो होता क्या है जो मैं महसूस करती हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, गुरुजी महाराज प्लीज टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो पर्पस होता है उसमें हम इतनी चमक धमक में हो जाते हैं कि हम शायद अपनी ब्लेसिंग्स भूल जाते हैं, या शायद हम भूल जाते हैं कि गुरुजी बहुत सिंपल थे और सिर्फ चाय प्रसाद होती थी. अब यहाँ सत्संग पे चाय प्रसाद के साथ समोसे, मिठाई, बड़ा कुछ दिया जा रहा है. कहीं ना कहीं संगत को ये फील होता है कि इट्स लाइक अ guests that have come to my house and I must, I mean I understand the psyche behind it, but फिर हम गुरुजी के हिसाब से तो नहीं कर रहे ना, जैसे वो कहते हैं. That is not Guruji's way. हाँ, so वही चीज है जो मैं चाहती हूँ कि आई रियली होप कि जो भी संगत इस को सुने बाद में इसको समझे कि गुरुजी का भाव उसमें क्या रह गया अगर हम वहां पे खिला रहे हैं चाय, समोसा और सब कुछ. एंड ऑल्सो आंटी व्हाट आई फील, आप बताओ इस बारे में, ऑल्दो आपने तो चाय प्रसाद ही देखा है, what is it could be a personal thing also, but I also feel to digest that food your body is working, digesting, rather than your mind is calm for meditation. In the first hour when you sit down with Guruji,
आपको पहले इतना खाना पड़ता है। एंड गुरुजी महाराज के दरबार पे कोई इनकार कभी नहीं करेगा, एंड मैं भी नहीं करूंगी जो भी होगा। बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है कि हम गुरुजी के हिसाब से करें, गुरुजी के डिसिप्लिन से चलें, सिर्फ चाय प्रसाद हो। बहुत अच्छा जी पूछा आपने। देखो, जो भी हमको मिलता है गुरुजी के दरबार में वो प्रसाद बनता है, तो हम जी उसको तो टोक नहीं सकते। पर नहीं। जो गुरुजी का सिस्टम है, ठीक है, वो तो हमें उसके हिसाब से तो हमें चलना चाहिए। गुरुजी का सिस्टम यही है ना कि सिर्फ चाय प्रसाद, तो फिर हम जी अपने मुंह में डाल के इतनी सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? क्या फायदा? At the end of the day, you are doing satsang to be blessed by Guruji, not to be talked about by the Sangat. जी Now it is के उसके सत्संग पे गए थे, हमें इतना खाना मिला, इतना ये हुआ, इतना वो सुंदर डेकोरेशन, पर किसी ने बोला कि हाँ, कि गुरुजी का भाव वहाँ, गुरुजी की एसेंस हमें दिखी, या गुरुजी का एसेंस हमें मिला, या हमें वो ठंडक मिली जो मिलती है गुरुजी के दरबार में बैठ के। जी So that is getting lost. एब्सोल्युटली। That is getting lost. And that is the, again, I love the word Bhambarbusa, yes. It is the Bhambarbusa word. We are all in that. But if we go back to what Guruji said, that I am a practical Guru, then we will be following his way. It is simple. Everything is simple. Guruji ke cha pila isnu pani pila. It was never cha prasad, never pani prasad, jal prasad, never. Oh yes, Yeah. langar was langar, but everything else was very simple. Now everything is complicated because the Sangat people's mind is so complicated that they forget to add Guruji's words in it. जी And इट्स हार्ड एज संगत। बहुत संगत है जो फील करती है, बट किसे कहें, गुरुजी के दरबार का निरादर ना हो इसलिए कोई कुछ कहता नहीं है। now, why? एंड हम It is your कह भी house. नहीं कुछ कह, हाँ जी, हम कह भी It's नहीं your सकते। house. You are doing satsang in your house. How you do the satsang in your house is you. जी And nobody has a right to come and tell you तुमने फूल क्यों नहीं लगाए, तुमने लंगर के साथ इतने कम चीजें क्यों रखे। ना, बिल्कुल नहीं। जब गुरुजी ने गाइडलाइन दी हुई है, बिल्कुल। then why do beyond that? And Guruji's like guideline is really basic. It's वेरी very. सिंपल। So why would you add your two bit in it? I mean, are you a guru? If you're a guru, then please form your own cult. But Guruji has given his own guidelines for all of us, and we all need to follow that to the T. एब्सोल्युटली। सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज। आई थिंक बहुत संगत इसको सुन के समझेगी, एंड दे विल, आई एम श्योर काफी संगत इसको फॉलो भी करना चाहेगी कि वाकई हम डिविएट हो गए हैं। सो कीप द लंगर प्रसाद ऑल्सो सिंपल, कीप द चाय प्रसाद एज चाय प्रसाद। अगर आप किसी के सत्संग पे जा रहे हैं, जो मिले खा लीजिए, बट if we share this with संगत, then I'm sure संगत समझेगी कि वाकई हम गुरु जी के भाव से करें चीजें। चाय प्रसाद में भी ब्लेसिंग है, अगर आप नहीं भी कुछ देते उसके साथ, वो भी ब्लेसिंग है। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज It's आंटी। not blessing, it is his way. इट इज हिज वे, इट इज Yes. हिज वे ऑफ ब्लेसिंग यू। Yes. अच्छा, गुरुजी आपने से पहले सॉरी अंकल, कुछ कह रहे थे आप वासन अंकल? इट वाज इट्स गुरुजी's ways। Yeah. Guruji's ways and very simple ways. He didn't have मैं तो anything मैं तो complicated. बैम्बी आंटी यूएस में जितने भी टेम्पल्स हैं उसमें जो उनके ट्रस्टीज हैं उनसे जब बात करता हूँ ना, 3-4 लोगों से मैं बात करता हूँ जो ट्रस्टीज हैं, तो उन सब का काम करने का तरीका अलग अलग है। तो जब मैं उनको बड़े मंदिर का हवाला करता हूँ या एम्पायर स्टेट का हवाला करता हूँ कि सादगी रखो और जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करो, तो वो कहते हैं आपको किसी ने कहा है क्या कि ये जो हो रहा है वो गलत है। मतलब डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट थिंग्स। अगर वो सुबह अमृत वेला का टाइम है उनका, अगर वो सपोज गुरुबाणी शब्द नहीं चलाए गए, तो मैंने उनको बोला कि नहीं आपको गुरुबाणी शब्द चलाना चाहिए अपने उसमें, तो आपको किसी ने कहा है क्या। मतलब वो वही ऐसे होता ऐसे है ना। अब एक लाइन आ गई है, अगर आप पुराने संगत हो तो वो सुन लेंगे, अगर आप नए हो तो वो नहीं सुनेंगे, और फिर उनको जो गाइडेंस मिलती है वो उसके हिसाब से चलेंगे।
आंटी under one guidance ना. आंटी मैं इतना हैरान हो गया हूँ कि मेलबोर्न में मैं 4 महीने पहले किसी रिंगवुड मंदिर में गया था, मैं नाम ले रहा हूँ, रिंगवुड मंदिर में गया था। वहां पर जब गुरु नानक देव जी का गुरपर्व था उस दिन, तो गुरपर्व था, तो मेरे को लगा कि मतलब आज जो है वो 2 घंटे 1.5 घंटा शब्द गुरबानी शब्द सुन के आऊंगा। तो वहां शब्द नहीं चले, वो गुरबानी शब्द नहीं चले थे, कुछ और चला था, जो कि हम लोग उसको गुरु जी महाराज के समय की मर्यादा के हिसाब से ठीक नहीं था। वासन अंकल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू, इवन दो वी हैड थॉट, मैंने सोचा था ये सवाल करूंगी, बट नॉट टू स्टर अप एनी कंट्रोवर्सी। सब भजन, सब कीर्तन, सब शब्द भगवान से जुड़े हैं। आप मंदिर में जाते हो, वहाँ कीर्तन होते हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या गुरुजी एम्फसाइज करते थे, हमें पता भी है संगत को कि शब्द कीर्तन शब्द चलने चाहिए, व्याख्या वाले शब्द चलने चाहिए। आजकल मोस्टली संगत knows what they are, what kind of playlist गुरुजी like, बट फिर भी कोई संगत नहीं होती है, या उनको लगता है बस ठीक है कोई भी भजन लगा दें या कोई भी व्याख्या लगा दें। हाउ इज दैट करेक्ट? इज दैट स्टिल ओके आंटी? मतलब कि क्या गुरुजी चाहते थे, हम कैसे शब्द चलाएं? आंटी, it is not a matter of just चलाएंगे शब्द, it is a matter of training the soul. Yes. So गुरु साहिब जी said, ये युग जो है वो शिव जी का है, और जो अगला युग वो आ रहा है वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी का होगा, गुरु नानक देव जी का होगा, सॉरी, right. So we all are definitely not going to get mukti in this lifetime, but the Shabad Kirtan, the music, the way it affects our soul is a feeling we carry through lifetimes. Okay? कईयों को ड्रम पसंद आता है, कईयों को बांसुरी पसंद आती है, कईयों को सितार पसंद आती है. Why? Because it is something we carry within our soul, which affects us. We are at different levels inside our body. Different levels inside our body are connected to different instruments. Okay? So these instruments then take us higher. When we pray, when we hear, sometimes कोई ढोल बजा रहा होगा और आप मस्त हो जाओगे, because it's given you a high. कोई सितार बजा रहा होगा, अगला बंदा तुम्हारे साथ, तुम यौन कर रहे होगे, अगला बंदा तुम्हारे साथ मस्त लगा होगा. ठीक है? This is all about the soul. ठीक है? So गुरु साहब जी जानी जान है, उनको पता था अगला जो है वो सरदारों का होगा. That is why we wear suits. That is why even my bachas had to wear suits when they went to Satsang. Guruji did not like pants and tops. Once I wore thank you. I've never worn it, but now I know. Once I wore a sari and went to Guruji. I mean, I had gone to the neighboring house, Bedi uncle's house, and I had worn a sari that day. And Satsang was over, and Guruji obviously knew I was in Bedi uncle's house, so he sent Sadama, Bamby Singh. So I went there, and Sudha aunty and her daughter was sitting next to Guruji, and Guruji darbar mein niche baithe the aaram se. And Sudha aunty said, Guruji, Bamby kitni achhi lag rahi is sari mein. Meko dekh ke to changi nahi lagdi sari mein. So sari got rejected. Whichever aunty would wear a sari and come, he would tell them suit. Why is he doing this? There's a deeper meaning. He is preparing all of us for the next yug, which is Sikhism. Correct. And that is why we are learning, we are hearing, we are even eating. It's all Panju food we eat now. We don't eat Maru food or South Indian food or things like that. Those are happening sometimes. We're actually eating Punjabi khana. Langar vich ki hunda hai? Ghyo use karo, tel nahi use karna. You understand? And ghyo, now everybody talks about, my God, oil is bad. Guruji ne pehle dikhaya, practical guru hai, that khana ghyo vich banao. So, whatever, it is not a matter of right or wrong. It is your Guru Sahib taking you practically through things to prepare you for the time to come. Because it's not only you he's preparing your whole khandan.
Correct. your बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे. This is his way. Please follow his way. This is Thank what you, it Aunty. is. It is not this one is right or that one is wrong. It is he is Follow preparing Guru. you. Sahib is preparing you for something. Accept it and move according to Sahib's guidance. Absolutely. Beautiful message. And I think that's why we have connected with Bamby Aunty, जो गुरुजी की शरण में उनकी physical presence में रहे हैं. बहुत कुछ सीखा है. And I'm sure Bamby Aunty, आंटी मुझे ये बहुत क्यूरियोसिटी होती है सवाल की, even though it's not in my questionnaire anywhere. I do want to ask you कि मैं किसी संगत ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ कहते ना ओ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਨਈ ਸੰਗਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਲਿਆ because you know as you can see him we believe in him we you know maybe we don't some of them haven't surrendered but at least we don't question anything because we haven't seen him. And then this uncle who is Purani Sangat, I can't remember his name, उन्होंने क्या कि कहते नहीं ऐ ना कहो पुरानी संगत नई संगत ना कहो because ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਈ ਸੰਗਤ should really thank that we didn't have to go through that pain. We have seen Guruji in this form, in his Sarup form, and Hamale. So, Auntie, just quickly tell us. I mean, I'm not going to ask you how was Guruji's Vichoda, but did you really, Auntie, first believe कि आप भगवान के साथ बैठे हो? Because किसी संगत ने मुझे बोला था कि हमें बहुत बाद में पता चला कि हम रब दे नाल बैठते होंदे सी. I'm sure you knew he was God and he was Mahashiv. What was the feeling? No. You did not? No. I thought he was a fraud. Sorry. But I am telling you, the way we met, Sahib, there was no way I could have. I mean, you know, when I was younger, there were all movies of these saints, yellow robed, doing hideous stuff to women and wealth and everything. All movies were about that. Okay. So for me, we have our 10 gurus and we were very content. But it is a Punjabi culture or Sikhism में होता है कि हमारे so and so pai ji aa rahe ne, the son ji aa rahe ne. This is normal in our culture. And उनके फिर पूरा आदर होता है, सब कुछ होता है. And when my father-in-law, it was actually Tani Aunty who doesn't remember, but Tani Auntie's husband who asked Guruji for an appointment for my father-in-law. And the day my father-in-law walked in, Guruji was most dramatic and sitting on the gaddi and raises his hand and said, "Oh, dekho, Ronak aaya, Moti Sami aayi." And I just thought, yeah, Ronak Singh's name is well known and comes in the newspaper. I said, who doesn't know him? What's the great news? I said, theek hai. Then Sahib looked at my mother-in-law and says, Gurmeet, tu bhi aa gayi? And I nudged my mother-in-law and said, ye to fraud hai. So my mother-in-law nudged me back, shut up. And I thought perhaps, you know, we're sitting in the Sangha, we're standing among his Sangha, and I should have not said that. And so I kept shut. And then on the way home, my mother-in-law tells me, कि मेरा passport का नाम गुरमीत है. I was 8 years into my marriage and I did not know my mother-in-law's name was not Meet. Everybody called her Meet and not Gurmeet, but her passport name was Gurmeet. So my first view about Guruji was that no, he's not alright. Then it was, okay fine, he can cure me because he cured my migraine. That there's a limit, there's a limit, there's a limit. I kept putting limits in my mind for Sahib because I love Sri Guru Gobind Singh Ji. Okay. Since I was a child, my passion, my everything has been Sri Guru Gobind Singh Ji. So for me, it was, okay, no, you can never reach there. This is Sahib. And this is Sri Guru Gobind Singh.
So I kept putting limits till the day my daughter passed away. And the way Guruji looked after me, he wouldn't let me cry. He wouldn't let Sati cry. He wouldn't. Can you imagine, we were laughing with friends also when they would come over. Then we had our girls who would put up skits for us, their friends who would come and put up skits for us to make us laugh after everybody's gone. The way the whole world literally prayed. I mean, to the extent that one day I told Guruji, let me cry. I can't, because I was feeling heavy and claustrophobic. Because I could understand that Guruji was controlling everything. Yeah. And then my younger daughter told my mother-in-law how Guruji, and my younger daughter would not talk, Noor would not talk till 2 years. And then she told my mother-in-law how Guruji came, she explained how Guruji came and took Natasha. That is, after that, I started understanding Guruji. After that, all of us started realizing that there are no limits, that he is actually Rabji. So Guruji, Guruji had such a human nature, and so human, and not like all the saints we see, that it was sometimes very difficult to segregate the human from the divine. ठीक है, गुस्सा कर देना जैसे हम लोग करते हैं, अगर आप सम तो आपको गुस्सा कैसे आ सकता है? But that was his way of clearing up your stars. But no, it was not possible. He did not make it possible for us to realize that there is more to sight than what he shows. Absolutely. How beautiful. So, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के, because as you started and said, no, I did not believe that he was God, and yet you surrendered so beautifully. So, we are very, very fortunate कि हम गुरुजी से जुड़े हैं. Aunty, you were mentioning, आपने अमृत वेला mention किया था. I wanted to jump in that time, but I didn't want to interrupt you. We have heard the word Amrit Vela from Sikhism, and कि Amrit Vele utho, naha dho ke paat karo, and huge blessings. All the gods are awake that time. It's a beautiful time to be up and connecting with the spiritual world. We know that. But what did Guruji Maharaj say for Amrit Vela? Did he say ke, from what I remember, did he not say ke chalde firde paat karo Amrit Vela usi vele hai? Or did he actually say that nahi Amrit Vela utho swere 3 baje 4 baje paat? What was his guideline? When should we be praying for it to be most effective? What did Guruji Maharaj say? Guruji Maharaj gave specific times for specific people. Like Sukhi Aunty, he gave Chandigarh Wali, he gave 2 o'clock in the morning. Okay. Back to the general, we were given 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. So you get up at 3, then the effect of the prayer is as diamonds, because we can only understand when we add a certain value to things. So Guruji uses it like diamonds. 4 o'clock is like gold, 5 o'clock is like silver, and the intensity and the purity, okay, that you get in your prayer and in your meditation at that morning hours, you can't get it throughout the day. It's not possible. Whoever has woken up in the morning knows that if they missed it, the very essence of it cannot be achieved throughout the day, unless you have reached a point in your life or reached a spiritual stage in your life where every vela becomes Amrit Vela. Correct. Okay. Beautiful. So like Guruji never used to say ek line with sab kuch, ke ae karoge te ae hoega. Something sometime, mat hai, blessings hai, so you will be able to put it together. Those was different for every individual, every sangat. Initially, no, there are certain sangat Guruji would say कि इतने बजे उठो, but to the general sangat, मतलब जैसे सत्संग में बैठे हुए, मतलब गुरुजी के जब बैठे हुए आसन पे, उन्होंने खुला जब करते थे प्रवचन कभी कभी, तो कहते थे 3 बजे उठा करो, पाठ किया करो, 4 बजे 5. Initially Guruji used to make me
have a bath, look after the Granth Sahib early in the morning. Okay, that means I was getting up at 2:45, नहा धो के 3 ऊपर जाओ गुरु जी के कमरे, वो सारा करो. Then get up again, and bachas used to be small, so they're getting up at 6 again, get them ready for school, because I was very particular. Okay, I'm going to get them ready for school always. I could not handle it. It was not possible. So one day I just went to Guruji, said, I can't do it. मैं वो भी करूं, फिर ये भी करूं, फिर I work also, so दोपहर को मेरे workers भी होते हैं. I can't do it. I'm not going to do it. So then Guruji would say, okay, fine. Then just get off the bed, जब 5 स्नान करके बैठ जाओ on the mat next to your bed. You know, sleep is so precious. And every time I would feel that Guruji is trying to wake me up, I would say, Guruji, next time, Guruji, next time. So 2-3 weeks, I just passed like that. Then one day, I fell off the bed, and I have no idea how, but I landed on my little finger. मतलब when I fell off the bed, I fell off, and हाथ रखने की जगह I landed on the little finger. वो जो तराड़ थी ना, उसके बाद I used to get up every day कि गुरुजी ने फिर मेरे को गिरा देना, फिर कोई और चोट लग जानी है. अब पता नहीं किस पे गिरेंगे. Right. ये महाराज के तरीके हैं. But then that used to irritate me, because I used to get very dark circles. So I went to him again and he said, I can't do this. I get dark circles. I don't like it. I like my prettiness. I don't want dark circles. कहना नहीं तो पाठ कर कुछ नहीं होगा. So वो dark circles का भी चक्कर चला गया. फिर भी स्लीप इतनी प्यारी है कि मेरा नहीं दिल करता था करने के लिए. फिर एक दिन गुरुजी ने समझाया कि ए पाठ, why do we do it alone? Why do we do it at that particular hour? Because when you die, तब अखां दे आगे अंधेरा आंदा है. ठीक है? When you get up in the morning at 3 o'clock, it is अंधेरा. But because you have been praying for whatever time, your mantra inside you starts automatically, or you start thinking about Guruji, or talking to Guruji. Guruji, मैं उठ गई हूँ, अभी बैठती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, whatever. It is Guruji, 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 and that अंधेरा जो होता है ना, you're used to it. Now that अंधेरा that you get up at 3 o'clock is the same अंधेरा, darkness जो आता है जब आप मरने लगते हो. Oh, so it's getting you comfortable. So when you reach that point, it's when easy you reach transition. that point, when you see the darkness, your soul automatically starts talking to Guruji and praying to Guruji. Oh, very interesting. Okay. So at that point, instead of thinking of kids, there's that, because Kendana, whatever your last thought is, you get attached. You're actually thinking about your side, actually thinking about prayer. Your mind, because your mind is not clear, but you can see its darkness. So you're automatically, अपने मन से आप शुरू कर रहे हो, पाठ शुरू कर रहे हो, आप उस स्थिति में पहुंचते हो कि आप पाठ में हो. Beautiful meaning. I never thought कि ये अमृत वेले की ये significance होगी. It is so deep. It is not meant to be in sangat. No, I mean Amrit Vela, from what people understand, is कि सुबह blessings ज़्यादा हैं. Everybody is trying to do it because it's the best time to connect with the spiritual world. Yes. But as you said, it's actually for the future, when your soul has to transition. Both here now and when your soul has to transition from life to death, right? Yes. So it is not listening to Kirtan. It is not reading books. It is pure meditation. Even if you sit for 5 minutes initially, by the clock, it is pure meditation, and get used to the noises around you. If your husband snores, or your kid screams, or whatever, or doors crack, or whatever, I'm just giving stupid examples, but it has to come. You have to learn to center. And it is not in satsangs. It is not. Right. Wason uncle, you had some question you wanted to ask. मैं तो सिर्फ मेरे दिमाग में जो अभी आ रहा है वो यही आ रहा है कि बेबी आंटी, महाराज ने आपको फ्यूचर टाइम, आने वाला जो समय है, अभी जो कल को जो टाइम आएगा, आने वाले समय में कुछ महाराज ने गाइड किया हो तो जरा बताएं प्लीज. अंकल जी, महाराज सबको कई दफा बोलते थे ना, सबको खुला बोलते थे. मतलब ये चीजें काफी संगत को पता है कि उन्होंने बोला हुआ है कि जो
आने वाला टाइम है वो बहुत माड़ा टाइम है कि सुखमनी साहिब करना बहुत जरूरी है। जी ठीक आंटी। है, अगेन सी इट शिफ्ट्स टू सिखिज्म। यस। तो ए इतना जरूरी है कि हर एक घर विच वाइब्रेशन चेंज करने के लिए दैट सुखमनी साहिब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक यासी के दिल्ली जो है ना इज मेड ऑन टॉप ऑफ ड्राइड रिवर बेड्स, मतलब दे आर रिवर्स बिलो, जो पहले रिवर्स होती थी दिल्ली के नीचे चलती थी, अब वो खाली हो गई हैं, खोखली हो गई हैं, और एक दिन इतना बड़ा भूचाल आना है कि पूरी साउथ दिल्ली उसके अंदर चली जाएगी, जी आंटी, कि पहले भी खत्म हो बता जाएगी, दीजिए। हाँ जी खत्म हो आंटी। जाएगी। राइट। फिर उन्होंने क्या सी कि जो मंदिर वाली रोड है, ठीक है, दैट विल बिकम द सेंटर ऑफ दिल्ली, नॉट कनॉट प्लेस। जो मंदिर वाली रोड है वो सेंटर बन जाएगा दिल्ली का। जी आंटी। एंड दैट जितने भी मतलब ऐसा टाइम आएगा कि गुरु साहिब जी की संगत will have its own party, will have from the prime minister to all जितने भी होंगे ऑफिशियल सारे गुरु जी के संगत के होंगे और गुरु जी के होंगे, तब वो टाइम सब तो चंगा होएगा क्योंकि सब सच के उत्ते चलेगा। शुक्राना So I गुरु don't know जी। when it will be. Guruji. But that was one. And then because I love India and I would keep saying कि नहीं मेरे को अब्रॉड नहीं जाना, मेरे को इंडिया रहना, मेरे को आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। तो गुरु जी एक दिन एम्पायर स्टेटमेंट डांट के बोलते हैं ये इंडिया इंडिया लगी रहती है, आगे जाके 12 द्वीप हो जाने ने। ओके, 12 द्वीप। 12 द्वीप होंगे, 12 संत बैठेंगे, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੂਰੇ द्वीप ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। and that is how life will be, जी आंटी। which I didn't realize कि water will rise. Now I'm realizing that water will rise. अगर 12 द्वीप रह गए तो water has to rise ना। यस। Yes, water will rise. जी आंटी। Why Guruji wanted to connect us के ग्रब ना जुड़ो, पाठ करो, क्योंकि अगे कलयुग भी आना है। सत की कहंदे घोर कलयुग आना है। एंड कहंदे कलयुग दे विच ही हैगा जेड़ा तुसी रब नाल इन्नी इजीली जुड़ सकदे हो। सतयुग दे विच तां बहुत तप करना पैंदा सी, तब रब तुहानू मिलदा सीगा। So we are in a time which is of dire need, जिन्हें कहंदे हैं that it's high time we connect with our Guruji। एंड जे तुसी गणेश जी मानदे हो तां ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, बट जे गुरु जी ने कनेक्ट करोगे he's the ultimate divine, he's Mahashiv, he's basically the whole cosmos, महाशिव, he's महाशिव। Mahashiv। To So him all and all in him, all in because him। every god has a mantra which we cannot achieve because we are not that pure. So गुरु जी की कहते में गुरु दी ड्यूटी की होती है हर एक का पाठ लेके उसको साफ करके जिसनु देना है वो खुद पेश करेंगे ताकि तुम्हारा प्रेयर एक्सेप्ट हो जाए। Right। Auntie, we're gonna basically wrap up with this last question. I had the honor of reading Guruji, my father. What I want to ask you is that you were graced with a blissful time with Guruji in his Sharan, in his physical presence. And you went on to writing this beautiful book, Guruji, my father, which I also had the honor of reading. What have you been able to take away? If I can't say one thing to take away from Guruji, there's so much. But जे मैं कहां कि कोई एक चीज जेडी तुहानू utmost गुरु जी दी लगी कि मैनू यह चीज अपनी लाइफ च कैरी करनी है, what would that be? And then also some words of encouragement for the Sangat today, so they can form an unbreakable connection with Guruji. These two things I think will really help our Sangat today to understand who Guruji was and why we need a Guru in our life. Very right. Well, it can't be one thing, but yeah, one thing which all of us have led our lives by. And my kids say, Mom, we are living the Lulu life.
Delulu means delusional life. Delusional is Delulu. So Yeah. they'll say, Mom, we are living in a bubble. We are living in a Delulu land. It is because beyond love, beyond everything, if you don't have hope, you cannot live. All of us have written something stupid for our lives. Asi khud hi likh ke aaya. Nanak dukhiya sab sansar. So everybody has some problem or the other. Maybe some have more to a certain degree and some have less. And ours has been one crazy life. Like my husband will say, "Tu likha ke lai," and I tell him, "Tu likha ke lai." Ki zarurat si enne pange len di. So what has actually helped us go through this life is that we know that Guruji knows everything. That wherever I am safe. Wherever I am is because Guruji wants me here. And whatever I have to go through is with his knowledge. So let me just walk through it. Instead of getting emotional and going crazy and saying, why me, why this? Chalo, let's walk through it. It's just a thorn, it's not the sword. So let me just walk through it. So we have gone through huge problems in our life. With this thing in our heart that we know that Guruji is taking care, we surrender to him. And if he wants this thorn inside our foot, so be it. Let's just keep moving. Let's just move on. Because the other thing we realized is all experiences, if we do not learn from them, they keep repeating. They are patterns. Life lessons, yeah. No, patterns. These patterns will keep happening again and again till you have learned the life lesson. Learned this life lesson, yeah. Yes. So you need, if something has come to you, step back and understand, A, do you owe the person or the person owes you? Listen to your gut. And go through it as calmly as possible. I still don't manage to do it. I tried it could be simply a karmic debt that you have to fulfill in this, and if you don't, then you're dragging again in the next life. Yes. So face it. Know that Guruji knows everything, and just go through it. No committing suicide and no saying मैं मर गई and no saying Guruji ताकत दो, help us go through it. Because problem तो सबके लाइफ में, पर ये है कि आपने अगर गुरुजी की लड़ पकड़ी है तो गुरुजी की ही लड़ पकड़ो. Yes. Too many cooks spoil the broth. They will say, आप कर लो, नहीं आप कर लो, नहीं तो आप कर लो, नहीं तो आप कर लो. Even gods are like that. एक लड़ पकड़ो, एक लड़ के साथ जुड़ो, ताकि he is responsible for you. Yes. Somebody has to be responsible for you. Yeah. Okay? If Saib is responsible for you, then you will be able to go through whatever. And it is his may, it is his blessing. And his shukrana for giving us this Delulu life, which we've led, where we've gone through mayorship for 25, 27 years. But it's fine. He shows his presence. Saib is there. Saib guides us. And we are in his sharan, and uska bahut shukrana. There can be no shukrana. Absolutely. Beautifully said, Auntie. बहुत कुछ अभी भी गुरुजी से सीखना है. कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, so गुरुजी की पिक्चर चलती रहे, बस ऐसी ही चलती रहे, and there's so much to learn. We'll be making mistakes too, unfortunately, but as long as we are able to learn from that and become better souls for Guruji, that's the whole objective. Thank you so much, Bamby Aunty. It was such an honor when I was told that I can be part of this channel for Guruji and be talking to Bamby Aunty. I said, "Pehle to mujhe book padhni hai. I don't want to be talking to someone who has itne, her order is higher because she's been in Guruji's sharan." We should only say honor, add the word honor,
when we all are given a chance to get together and talk about Sai. And Yes. that is Correct. the biggest honor. And that is the biggest love. Big And I blessing. thank both of you very much for आंटी letting me. बिफोर यू गो, मैं गुरुजी के चरणों में ये अरदास और एक प्रेयर जो गुरुजी हमेशा कहते थे करनी चाहिए और संगत को भी